This is NDTV, and you're watching Classics. Hello and welcome to Born Wild, the show that takes you to the heart of wild India. It takes you up close and personal to some of India's most endangered animals and the people who help them fight for their survival. This week, we are going to visit the Pheasant Captive Breeding Centre at Sarhan in Himachal Pradesh. Here at the centre, they have about 4 species of pheasants: the koklas, the Khalij pheasant, which are more commonly found, the Himalayan monal, a spectacular bird which is the state bird of Himachal Pradesh, and the western tragopan. Now, the western tragopan is a highly endangered bird, and all the focus that this centre puts is towards that bird in breeding the western tragopan. It's a Schedule 1 animal, and its numbers are threatened in the wild. Rough estimates say that about 5-6 years ago, when there was a census done, they put this number at less than 1,000. At this centre, right now, there have been only 3 chicks ever to be born in captivity. One 12 years ago, and now about a week ago, 2 more were born. This centre plans to expand itself from a mere captive breeding centre to a conservation centre, and then they hope to be able to reintroduce the western tragopan to the wild. We're going to visit the centre and see just how successful they have been so far. If you think the peacock is the most spectacular bird in India, think again. In this episode, we introduce you to some Himalayan bird species such as the western tragopan, the Himalayan monal, the Khalij and the koklas. They all belong to the pheasant family, just like the peacock, and are all just as spectacular, but very little is known about these birds. The western tragopan is the most endangered. It is on Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of India 1972. It is meant to be as protected as the tiger. Which is what makes the captive breeding centre for pheasants in Sarhan, Himachal Pradesh so special. Efforts are being made to breed the western tragopan in captivity. The most colourful of all the pheasants, the tragopan has proved a very delicate species, hard to rear in captivity. Established in 1987, the centre first started out as a rescue centre for wild animals and birds found in and around the area. In fact, the first few pheasants that came to the centre were birds that were rescued from the wild. शुरू में चरान पक्षी विहार 1988 में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे पक्षी गाँव में सर्दियों में बर्फबारी के कारण नीचे आते थे तो यहाँ लाया जाता था और उसकी सुरक्षित हेतु ये बनाया गया था। अब ये जो है कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में बदल गया है। 1993 में यहाँ पर वेस्टर्न ट्रैगोपैन ने एक बच्चा दिया था जो आज भी यहाँ पर जीवित है, जो आज पूरे 12 साल हो चुके हैं। The tragopan behind me, the western tragopan, is not just any ordinary western tragopan. He's the first western tragopan to be born in captivity in the world. He was born here at this centre 12 years ago, and he survived since then. Now in this centre, another miracle has occurred. For 12 years there's been a gap, but again 2 new chicks have been born, and it's hoped that both those chicks will grow up as healthy as he did and contribute to more chicks in this centre. Given that no zoo around the world has been able to breed these birds in captivity, these 2 chicks are no mean achievement. The 2 young tragopan chicks were hatched by a domestic hen as their mother did not sit on the eggs after she laid them. The Forest Department is making an all-out effort to ensure that these chicks have a safe passage to adulthood, for they have not always been so lucky. When the eggs are hatching, they are removed from this area of the centre that is frequented by visitors to ensure that the chicks are not stressed.
26 जून 1995 को यहाँ फर्स्ट बार ट्रैगोपैन का प्रजनन हुआ था, जिसमें कि ट्रैगोपैन की फीमेल ने 3 अंडे दिए थे, लेकिन नेचुरल हैचिंग नहीं हुआ। वो हमने ब्रूडी hen के नीचे डाल दिया, जिसमें से 2 चिक्स बाहर आए, लेकिन एक चिक्स जो है 9 दिन के बाद डेड हो गया, जो एक चिक्स अभी स्टिल जो है अलाइव है। उसके बाद यहाँ जो फिजेंट्री है, इसमें मैं अभी तक 29 मुनाल, 117 कलीज फिजेंट्स, 4 नंबर कोकलाश, 1 नंबर वेस्टर्न ट्रैगोपैन, अभी 1 नंबर 1993 में हुआ था, अभी इस साल 2 चिक्स और निकले, मतलब कुल मिला करके 3 बार ये 3 चिक्स जो है यहाँ ब्रीड हो चुके हैं। The pheasantry in Himachal has been receiving guidance from the World Pheasant Association. Experts who are based in England. The experts have been in praise of the centre and their efforts. हम जो फीडिंग का जो है, मैं अपना जो फीडिंग जो इनकी देख रेख का काम है, सवेरे 8 बजे से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्टली जो है डबल डोर जब है हमारे, तो डबल डोर में डिसइंफेक्शन के लिए पोटेशियम परमंगनेट का मैं उसको जो टांगों उसको अपने पैर को डीप करके वो तभी अंदर जाता है। इसके बाद जो है मेरा क्लीनर जाता है, जो उसको जो जितना भी बीट्स वगैरह अंदर पड़ा होता है उसको वो पिकअप करता है। उसके बाद हम जो जैसे कहीं ड्रॉप होता है, जो लिक्विड में कई बार ड्रॉप होता है, तो उसको हम ब्रशेज से सेवलॉन से में वॉश करते हैं। उसके बाद हम फीड उसको प्रोवाइड करते हैं। Initially at the centre, the birds were on an artificial diet. That is, they were being fed food that was nowhere close to their natural diet, or the diet that they normally subsist on in the wild. This may have even been affecting their breeding cycles. फीडिंग में हम 9 आइटम देते, जिसको मिक्स ग्रेन में देते। पहले हम इसी को प्रोवाइड करते थे। यूके जाने के बाद हमने वहाँ देखा, उनकी गाइडेंस ने फिर हम फ्रूट और वेजिटेबल भी देना शुरू किया, जिसमें हम ग्रीन ग्रास, पालक, मेथी ऐसे टाइप के उनको देते हैं। इसके साथ साथ एप्पल, ग्रेप्स, पोटैटोज और कैरेट भी उनको हम क्रैश करके अलग अलग मात्रा में देते हैं। तो इसके देने के बाद जब हमने फिर डाइटिंग चेंज हुआ, तो उसके बाद जो इसका जो अंडे लेइंग का वो है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, और हैचिंग का भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये उसका एक वहाँ जाने का एक अच्छा ही रिजल्ट आया। It was after the WPA visit and subsequent visits that the officers at the centre made to the pheasantry in the UK that the diet was changed. The diet for these birds at the centre now consists of fruits, vegetables and more importantly of soil and natural minerals and worms that are brought in from the wild, from areas where the birds are found naturally. The mud has small organisms in it like worms, insects and ants, which the birds then dig up and consume. This also makes them accustomed to looking for their food, which is necessary if they are to survive in the wild. ये दाना पानी देते हैं और जंगल से लेते दाना ये चूजों को खिलाना है। हम घर के ये जो बनौटी चीज़ नहीं देते, हम पत्थर देते पहाड़ों के। जंगल में क्या खाता, कितना साल हमने इसे काम किया, सर्वे किया। उधर देखा कहाँ बैठता जाजुराना, कहीं बाज पकड़ लेता है, कोई घुटकुरु पकड़ता है, कोई बचा लेता है, और घायल वाला जो है ये जाजुराना, ये मनाल हम यहाँ लेते हैं।